welcome or welcome back to my channel. So like my previous two fitness videos, workout videos, you showed me so much love and I'm very grateful for that. So like that only in the comment section you had said that you want a full body workout routine, not just the belly one. So I did a research on that and I found same Japanese, Chinese workout routine, and I found that ladies workout, so which helps us for our entire body. The targeted area will be our entire body, not just the waistline, not just the belly. So I hope you all will love this video too. So make sure you hit a like button and subscribe to my channel if you haven't done that already. और ये वीडियो में I'm gonna try and speak Hindi and English both, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना मुझे, like I've been making videos in English only, इसीलिए कैमरा के सामने अभी हिंदी बोलने को मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. बट आई एम गोना ट्राई एंड डू इट इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो सबको फायदा हो जाएगा इस चीज़ के लिए. और without further ado, let's just jump into the video. So guys, I'm gonna show you this workout routine. Before starting the video, I'm just gonna tell you one thing. This is a 5 minutes workout routine, and I have segregated few exercises for our whole body. And इसका आपको ये 5 minutes का वर्कआउट है. हर एक 5 एक्सरसाइजेस है, हर एक एक्सरसाइज 1-1 मिनट की है. एंड यू हैव टू डू दिस 3 टाइम्स. उसके 3 सेट्स आपको करने हैं 5 मिनट्स के, मतलब टोटल 15 मिनट्स का वर्कआउट आपको करना है to get proper. And if you do this workout for 15 minutes for 28 days, I guarantee you start from today and finish it on 28th day and come back to this video and tell me in the comment section. You will have a visible result and you can literally see a difference in your body. जो पहले था 28 days पहले और 28 days बाद में ये वर्कआउट करने के बाद. बट रिलीजियसली 15 मिनट करना है आपको. अगर आप उसमें चीट करोगे और वीडियो में आके बोलोगे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे मत करना, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप 15 मिनट ये वर्कआउट बराबर से करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, आप उसके साथ समोसे गोलगप्पे खाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला. तो हाँ, आपको ज़रूर आपकी डिज़ायर्ड बॉडी मिलेगी और हम ऐसे ही फन वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आपको भी वर्कआउट करने में मज़ा आए और मुझे भी आपको दिखाने में मज़ा आए. तो या चलो अभी जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर 1 minute. एंड इफ यू गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग, if you're lying on the bed and watching this video, then get up, जल्दी अभी उठो and start doing it with me, so that you know whenever you watch this video, और जब भी आपको एक्सरसाइज करना है ये वीडियो प्ले करो और मेरे साथ करो, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा and you will also be very motivated to do this, and I am guaranteeing you will lose weight. चलो let's just get started. 1 minute for this one. सेकंड एक्सरसाइज इज इट्स काइंड ऑफ डांस रूटीन, सो थोड़ा डांस होगा इसमें. तो ये एक्सरसाइज में थोड़ा जंप है, सो दिस इज काइंड ऑफ कार्डियो आल्सो. सो इट इज गोना हेल्प योर एंटायर बॉडी बिकॉज यू विल बी जंपिंग. तो आप थोड़ा जंप करोगे इस एक्सरसाइज में, तो इट इज गोना बी अ कार्डियो, तो वो थोड़ा हेल्प होगा. तो फर्स्ट आपको ये करना है, हैंड मूवमेंट ये है, इधर जाएगा हाथ और इधर जाएगा. जरूरी नहीं है प्रिसाइजली आपको ऐसा ही करना है, बट आपको हाथ मूव करने हैं. ठीक है, आपको हाथ से मूव करें तो आपको हैंड को भी मूवमेंट मिलेगा और आपके हाथ का भी एक्सरसाइज हो जाएगा. और उसके साथ आपको जंप करना है, और आपको सीधा जंप नहीं करना है, आपको थोड़ा डायगोनल जंप करना है ऐसे. तो आप ये जंप करोगे तो आपका ये साइड जो पोर्शन है, ये जो कर्व होता है अपना, उसके लिए भी यू विल यू नो दिस यू आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट, सो इवन योर साइड्स टोन हो जाएंगे, राइट. तो आपको लाइक यू हैव टू जंप लाइक दिस and this and this.
और ये इतना स्लो नहीं है, थोड़ा सा फास्ट होगा. इट विल बी लिटिल बिट फास्टर देन व्हाट आई लाइक द स्पीड आई शोड राइट नाउ. उससे थोड़ा फास्ट होगा. तो ये भी अपने को 1 मिनट के लिए करना है. यू हैव टू डू दिस 1 मिनट फॉर 1 मिनट. ओह माय गॉड, मेरा इंग्लिश और हिंदी इतना फंबल प्रॉब्लम हो रहा है ना. बट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग राइट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. दैट्स द मेन गोल. मैं कैसे बोल रही हूँ इससे कुछ लेना देना नहीं है. मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? Let's just start with this routine for 1 minute. Okay. So next exercise आपको squat में जाना है. Third exercise, you have to go on a squat position, and then you will come back up. Okay? So this is my own one. Okay? It is not from her. मैंने थोड़ा सा उसको वेरिएशन डाला है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाए. बहुत इंटेंस हो जाता है ना. So if you guys are beginners, then you will not be able to do so intense. उसकी वजह से मैंने थोड़ा लो डाउन किया है. फर्स्ट हम लोग का नॉर्मल हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इंटेंस, ये वो जंपिंग, एंड जंपिंग फॉर अ मिनट इट्स इंटेंस. तो अभी उसको थोड़ा लोअर डाउन करने के लिए, थोड़ा सा यू नो अपनी बॉडी को भी सेटल करने के लिए वी आर गोना डू स्क्वाट. ठीक है? तो वी गोना डू स्क्वाट्स फॉर 1 मिनट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वाट्स. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इसको प्लीए स्क्वाट्स बोलते हैं. लाइक दिस पर्टिकुलर स्क्वाट इज प्लीए स्क्वाट. तो आपका जो शोल्डर और नी का जो डायरेक्शन होता है, आपके नी ऐसे बाहर जाएंगे जब आप स्क्वाट लेंगे, और आपके टोज, आपका जो फीट है वो भी नी के ही डायरेक्शन में होना चाहिए. ऐसा किधर ऐसा नहीं होना चाहिए. जो नी अगर ये नी है तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए. इफ योर नी इज इन दिस डायरेक्शन, इवन योर टो शुड बी लाइक दिस. इट शुडंट बी लाइक दिस. इट हैज टू बी लाइक दिस. ठीक है? और you have to keep your hands like this. Okay? So let's start our PS squat for a minute. Which you have to do in little bit squat position. See, after doing the squat exercise, आपके thighs pumped up हो जाएंगे. You will feel like this is little sore, but that's okay. So here you have to do twist, twist, twist. ये थोड़ा सा difficult होगा जिसको डांस नहीं आता है, but you can do it. What you have to do is left, twist. अच्छा ये मेरा राइट है, आपका लेफ्ट होगा शायद. कैमरा में लेफ्ट लिखा होगा. ये राइट को आपको पुश करना है बाहर और उसको अंदर ऐसे लाना है वापस जगह पे. पुश करना है बाहर एंड देन यू ब्रिंग इट बैक टू वन पोजीशन. सेम इस साइड पे इसको ऐसे बाहर पुश करना है, उठा के वापस लाना है. ठीक है? लेट्स डू इट फॉर अ मिनट. मेक श्योर आपने आपका कोर एंगेज किया हुआ है ये एक्सरसाइज में, राइट? सो आपको स्टमक अंदर खींचना है और फिर ये कर करना है. तो ये आपको आपके कोर को और साइड्स को फायदा होगा, नहीं तो नहीं. ठीक है? So in this exercise you have to do arm out, arm out, arm in. उसके साथ चेस्ट भी बाहर आएगा. तो उसके साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू एंगेज योर कोर, एंड जब चेस्ट बाहर लेते हो तो स्टमक को सक करना है अंदर. सो विथ योर आर्म्स, ये जो लूज फैट होता है वो नहीं होगा. लाइक आपके आर्म टाइट, मेरी हिंदी. So in this workout we have to do arm out, arm in.
when our arms are going outside, you have to take your chest outside, right? And in this exercise, while doing this exercise, fully throughout आपको आपका core engage रखना है. You have to engage your core. सबको stomach in करना है, आपको अपने core को engage करना है workout के साथ में. So when you're taking your arm out, your chest goes out and your stomach goes in. Your core sucking your stomach inside, yeah? It goes like this, and then when you take it inside, you sit. Then you get up, then you sit. So it's kind of a squat also. It's like all in one exercise. This is our last exercise. तो थोड़ा सा intense होना चाहिए. इसको भी हमको 1 मिनट के लिए करना है, ठीक है? चलो. So now, once all the exercises are done, what do you have to do? Take your hand up, fully up, stretch, 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 go down. Go completely down, okay? Try to touch the floor. Come back up, put your hand up, नीचे जाओ, try करो floor को touch करने का. वापस ऊपर, वापस नीचे, ऊपर. Hi. So now we finished our 5 minutes routine. But ये सिर्फ 5 minutes नहीं है. If you're beginner as in अगर आप beginner हो, अगर आप workout आप regularly नहीं करते हो, तो do this for 5 minutes for 5 days. Then आप इसको बढ़ाते जाओ, 2 sets करो. ठीक है? You have to do minimum 3 sets a day. ठीक है? 5 minutes, 15 minutes का workout. Then your body will be snatched. Very curvy, very nice. Like I don't like very flat, very skinny body. I like my curves. You will be fit in this routine, in this workout. So you have to do it 3 times, 5 minutes ka, and take for starting take 5 minutes or 5 seconds to 10 seconds break in each exercise. And if you are okay with doing without break, then do it. And after completing one set, take 30 seconds break. Then do the another set, take 30 seconds break, and then do the third set. Okay? And I hope this video was also interesting and fun to watch. Do you all like my other videos? And make sure you give me a big fat thumbs up to this video and subscribe to my channel. अगर अभी तक नहीं किया है तो please subscribe to my channel and please show some love to my other videos also. It takes a lot of hard work to do, you know, film, edit and all that stuff. And I keep on searching for you all so that, you know, आपको भी फायदा हो, आपको भी proper information मिले. And so yes, like करना, share करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. ठीक है? मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए ढेर सारा प्यार. बाय.